हेलो गाइस, मैं हूं मोहसिन और आप लोग देख रहे हैं मोहसिन 8। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम Realme C17 का PUBG टेस्ट करने वाले हैं और हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इसमें हमें कौन कौन से ग्राफिक Realme की तरफ से अवेलेबल मिल जाते हैं। तो गाइस, मैं सिंपली सा PUBG पे आ चुका हूँ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ गाइस सेटिंग पे आप लोगों को ग्राफिक दिखाने के लिए, क्या मैं इसमें कौन कौन से ग्राफिक अवेलेबल मिल जाते हैं। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर प्रेस कर लें और गाइस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को लाइक करने के बारे में बताता हूँ। अगर आप लोग अभी लाइक कर दोगे और आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आएगी तो हो सकता है आप लोग डिसलाइक करके चले जाओ। तो मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा कि अभी लाइक कर दो, वीडियो एंड तक देखें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस, मैं सबसे पहले आप लोगों को PUBG का ग्राफिक दिखा देता हूँ। इसमें हमें Realme C17 कौन से ग्राफिक प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, मैं सिंपली सा आ जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद गाइस मैं इधर ग्राफिक पे आ जाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमें इसमें कौन कौन से ग्राफिक अवेलेबल मिल जाते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इधर मुझे स्मूथ, बैलेंस और HD का ग्राफिक अवेलेबल मिल जाता है। और अगर मैं HDR पे क्लिक करूँगा तो ये हमें अनेबल नहीं होता, यानी कि Realme C17 में हमें HDR ग्राफिक प्रोवाइड नहीं किया गया है फ़िलहाल। हाँ, वो अलग बात है कि ये थोड़ी, यानी कि कुछ ही टाइम में, हफ्ता 2 हफ्ते या 1 महीने में अगर ये अपडेट हो जाए तो HDR हमें देखने को मिल जाए। तो गाइस, इधर HD जो ग्राफिक है उसके नीचे हम इसको लो पे भी कर सकते हैं, मीडियम पे भी कर सकते हैं, हाई पे भी कर सकते हैं और इधर अल्ट्रा पे भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये भी अच्छी चीज़ है, इधर हमें हाई के बजाय अल्ट्रा दे दिए। तो गाइस, मैं इधर अपनी सेटिंग कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं इस मोबाइल पे आ चुका हूँ, तो मैं इधर अपनी सेटिंग करके बिल्कुल बैक आ जाता हूँ। आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखाता चलूँ गेम प्ले करके कि हमें इसमें किस तरीके से गेम प्ले कर सकते हो, क्या क्या मुश्किलात का हमें इधर सामना करना पड़ेगा। सपोज अगर लेग आता है या हैंग होता है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हमें सामने आती है तो उस बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। हाँ, नहीं, जो मेरे पास ऐड हुए हुए हैं लड़के, उनका जैसे आप तो इनके साथ खेल लो, जो है ट्रेन में आते तो ऐसा तो तुम ट्रेन को भेज दो, तुम ऐसा कर लेगा और तो मैं क्या और सुबह दुबई है कौन छोड़ कर बता। Expired! Dead! Target down! Nice shot! Expired! No mercy! Cover me! Kill! Expired!
The blue team is in the lead. Dead. Kill. Nice shot. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Kill. No mercy. Cover me. Reloading. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Dead. Killing spree for the red team. Nice shot. कि इस Realme C17 में गेम प्ले कर सकते हो पबजी का। इसमें कोई भी दुश्वारी या दिक्कत को कोई भी हमें सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत लैग हो रहा था, जैसे बहुत ही हल्का सा, जो यानी मतलब ये कि आप लोग उस पर समझ नहीं पाओगे लैग पे, तो इतना ज़्यादा लैग नहीं हो रहा था, हल्का फुल्का लैग हो रहा था। वो आप लोग ज़्यादा अगर गौर करते तो हो सकता है आप लोगों को फिर पता चलता। तो बाकी ये मोबाइल बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है C17। इसमें हमें पबजी बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। और गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। अब तक के लिए इतनी, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।